Hello and welcome back to the channel. So another method of measuring national income is expenditure method. It is a third method. We have already discussed about value added method, income method, and third one is expenditure method. So there are three ways. The third one is expenditure method. Expenditure method is a method which measures final expenditure on goods on gross domestic product at market price during an accounting year. So here we are talking about basically the final expenditure on goods and services which is done by the normal residents of a country. जो इस country में expenditure करेंगे final consumption पे domestic territory में, उसको हम expenditure method करेंगे. तो final expenditure on gross domestic product at market price and final expenditure method equals to GDP at market price. Final expenditure method is nothing but GDP and market price. बट अब हम ये देखेंगे कि फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं या क्या क्या आता है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. फाइनल एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन क्या है? पहला है प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर. सो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड. जो एक्सपेंडिचर गुड्स और सर्विसेज पर कोई भी हाउस होल्ड करेगा उसको हम क्या कहेंगे? फाइनल एक्सपेंडिचर कहेंगे, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर. इट इंक्लूड्स कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स. तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, जिनका एग्जिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि बटर एंड मिल्क. कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है विच कैन बी ड्यूरेबल. It can be furniture, it can be washing machine, it can be other gadgets. So these are private final expenditure includes consumer services, consumer non-durable goods, consumer durable goods. The other one is government final expenditure. Government final expenditure is expenditure on final goods and services by government sector. तो it can be defense personnel, जो हम defense personnel हो गया, education हो गया, बाकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. द थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जो इन्वेस्टमेंट करेंगे नॉर्मल हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर बाय फार्मर्स ऑन परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स. तो इसमें हम जो इन्वेस्टमेंट किसकी हो सकती है? इट कैन बी ऑन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि हम फिक्स्ड कैपिटल पे करेंगे, जैसे लैंड पे किया हमने, या फिर प्लांट पे किया, या सीड्स पे, या फर्टिलाइज़र पे. और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होगी वो हमारी स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट होगी. जो हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या है? प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, देन देयर इज अ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देन वी हैव net export. So net export is nothing. If we have to talk about net export is nothing but export minus import. Export is what? Expenditure by our residents for consumption of goods and services. Imports is expenditure by our residents from the goods that is making in abroad. So export minus import, that will define us about what? Net export. So sum total of expenditure on produced goods and services during a financial year is GDP at market price. Sum total क्या हो गया? It can be on final consumption expenditure plus government expenditure plus net investment expenditure. So we will talk about sum total of expenditure on produced goods and services during an year, that will talk about the GDP at market price. So if we have to discuss in detail what that defines us, first one is final
private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus investment expenditure. Investment expenditure is business fixed investment, government fixed investment, inventory investment, that is change in stock. So we have private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus investment expenditure plus net export, that is export minus import. That all will, if we add all of these, if we add all of this and this, it will be nothing but GDP at market price. GDP at market price is sum total of expenditure on domestically produced goods and services. GDP is the sum total of expenditure on domestically produced goods. So this is GDP at market price. It is the inclusion of net export, investment expenditure, government final consumption expenditure, private final consumption expenditure, that is GDP at market price. And if we deduct depreciation from GDP market price, it will be NDP at market price. Further, if we deduct net indirect taxes from NDP at market price, it will talk about NDP at factor cost. और अगर NDP at factor cost में हम net factor income from abroad add करेंगे, if we add net factor income from abroad in NDP at factor cost, that will give us NNP at factor cost, which is a national income. So this is about national income in expenditure method.